Good morning, my dear children. Myself, Miss Chelsea Rabre, and today I will teach you subject mathematics. Okay, students? तो बच्चों, मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ subject maths. So, student, in the last lecture, we saw the lesson, right? Which lesson we saw in the last lecture? Yes. हमने कौन सा लेसन पढ़ा? Yes, we saw increasing, decreasing order, right? Yes. So in that lesson, what we saw? Very good. How to write number from smaller to greater, and how to write number from greater to smaller. Okay? We use the concept known as ascending and descending order. And that is also called as increasing and decreasing. Okay? Yes. So student, today we are going to see the next lecture, the next lesson, that is let's add. Okay? So student, before starting the lesson, we are going to revise the topic that I have taught you in the last lecture. Okay? तो बच्चों, लेसन स्टार्ट करने से पहले हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा इसके बारे में और देखेंगे. ओके? यस. So student, now on the blackboard, I will write some numbers and I will arrange this number in ascending and descending order. That is, I will arrange the number in increasing and decreasing order. Okay? So student, as you can see, there are some numbers on the blackboard, right? Yes. तो बच्चों, अभी हमें यही नंबर्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में फॉर्म करना है. ओके? वी हैव टू राइट these numbers in increasing order. तो बच्चों, मुझे बताओ, what do you mean by increasing order? Yes, when we arrange numbers from smaller to greater, it is known as increasing order. बराबर? जब हम नंबर्स छोटे से लेकर बड़े तक अरेंज करते हैं, उसे कहते हैं increasing order. So now who will tell me which number will come first? Yes. One number will come first because this is the smallest digit number. Okay? After 1, which number will come? 2. After 2, which number will come? Who will tell me? Very good. उसके बाद आएगा नंबर 3. बराबर? और 3 के बाद कौन सा नंबर आएगा? नंबर 4. बच्चों, आपको समझ में आया? Yes, I have arranged the number in increasing order. So now we will take one more example and arrange the numbers in descending order. Okay? तो बच्चों, मुझे बताओ, what do we mean by decreasing order? Yes, very good. जब हम नंबर्स
बिगर से लेकर स्मॉलर तक अरेंज करते हैं उसे हम कहते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर। ओके, तो मुझे बताओ पहला नंबर कौन सा आएगा? सबसे बड़ा वाला नंबर आएगा, बराबर। तो कौन सा बड़ा नंबर है? नंबर 9 इज द बिगेस्ट नंबर। उसके बाद कौन सा बड़ा नंबर है? वेरी गुड, 8, राइट। 8 के बाद कौन सा नंबर बड़ा है? नंबर 7। और 7 के बाद कौन सा नंबर आएगा? 6, बराबर। सो स्टूडेंट, here I have arranged the numbers in decreasing order and here I have arranged the numbers in increasing order. So student, now we will start with our new lesson, that is let us add. Okay, you can refer this book, that is combined book number 2. Student, now let us write the lesson's name on the blackboard. Okay, that is let us add. Let us add. तो बच्चों, आपको पता है what do we mean by addition? बच्चों, tell me what do you mean by addition? You don't know, right? Yes. So today we are going to study the concept known as addition. Okay? We are going to study what do we mean by addition. Okay? Student, you can refer page number 63. Okay? तो बच्चों, आज हम देखेंगे एडिशन किसे कहते हैं। ओके, यस। तो बच्चों, एडिशन इस शब्द का अर्थ है जॉइनिंग। व्हाट? जॉइनिंग। इट इज ऑल्सो नोन एज कंबाइनिंग ऑल थिंग्स टुगेदर। ओके, यस। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूं। So student, in my right hand I have one chocolate. Okay? तो बच्चों, मेरे राइट हैंड में एक चॉकलेट है एंड इन माय लेफ्ट हैंड देयर आर 5 chocolates. Okay? In my this hand I have one chocolate and in my left hand I have 5 chocolates. So student, can you tell me altogether how many chocolates I have? Yes? तो बच्चों, क्या आप मुझे बता सकते हो मेरे पास कुल कितने चॉकलेट्स है? In my this hand I have 5 chocolates and in my this hand I have 1 chocolate. Okay? तो मुझे बताओ मेरे हाथों में कुल कितने चॉकलेट्स है? Yes. Let us solve this sum on the blackboard. Okay? मेरे इस हाथों में एक चॉकलेट है और मेरे लेफ्ट हाथों में 5 चॉकलेट्स थी, बराबर। ओके, मेरे राइट हैंड में एक चॉकलेट थी और मेरे लेफ्ट हैंड में 5 चॉकलेट थी। तो मुझे बताओ ऑल टुगेदर कितने चॉकलेट्स होंगे? यस, फॉर दिस वी हैव टू ऐड बोथ द चॉकलेट्स। ओके, वी हैव टू ऐड बोथ द नंबर्स, दैट इज 5 chocolates प्लस 1 चॉकलेट। तो बच्चों, ये साइन है एडिशन की। ओके,
sign is known as plus. बच्चों इस साइन को हम कहेंगे प्लस. ओके, so whenever we will add something, we will use this sign. Okay, this sign is known as plus. So student, tell me what is 5 plus 1? 5 and 1. Tell me 5 plus 1 is 6. Okay. So student, our final answer is 6. Okay. That is, I had altogether 6 chocolates. Understood? So whenever you will add something, always keep in mind you have to use a plus sign. Okay? This sign is known as plus. See again. This sign is known as plus. So student, now we are going to see some more examples of addition. Okay? बच्चों, आप ब्लैक बोर्ड पर देख ही सकते हैं इस साइड में कितने बलून्स है? 2 बलून्स बराबर. और इस साइड में कितने बलून्स है? 3. 1 2 और 1 2 और 3. तो बच्चों, अभी हमें टोटल में कितने बलून्स है वो काउंट करने हैं. तो बच्चों, मुझे बताओ कितने बलून्स है? यस, for this we need to add, right? So student, I put this plus sign. Okay? तो मुझे बताओ कितने होंगे? Let us add. 1 2 3 4 5. तो बच्चों, हमारा आंसर है 5. कुल मिलाकर यह 5 बलून्स है बराबर. कितने बलून्स है? 5. कुल मिलाकर कितने बलून्स है? 5. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल सी some more examples of addition. Okay? Yes. So student, now we are going to solve another question. Okay? So student, now we are going to add these numbers. Okay? Yes. So student, tell me which is the first number? Very good. Our first number is 4 plus 0. Right? तो बच्चों, हमेशा याद रखना, हम 0 के साथ कौन सा भी नंबर ऐड करेंगे तो आंसर आएगा वह नंबर ही. Okay? For example, 4 plus 0 is 4. Understood? बच्चों, 4 plus 0 इसका आंसर आएगा 4 ही. Because 0 has no value. Okay? 4 plus 0 is 4. For example, now you will say, what is 10 plus 0? Yes.
Answer is 10 plus 0 is also 10. Okay? So whenever we add 0 with a number, the answer will be the number itself. Because 0 इसे कोई वैल्यू नहीं होती. Okay? Yes. Now we are going to see the second example. So student, tell me what is 2 plus 2? 2 और 2 कितने होते हैं? कौन मुझे बताएगा? 2 plus 2 is 4. Very good बच्चों. 2 plus 2 is 4. That is, I have 2 lollipops and my mother gave me 2 more lollipops. So altogether, I have 4 lollipops. Understood? So 2 plus 2 is 4. Okay? तो मुझे बताओ, अगला कौन सा सवाल है? Yes, अगला सवाल है What is 5 plus 1? तो बच्चों मुझे बताओ 5 plus 1 इसका आंसर क्या होगा? Very good. 5 plus 1 इसका आंसर होगा 6. See this. I have 5 fingers and I added one more finger to these 5 fingers. So altogether it became 6 fingers. Understood? तो यही इसका जवाब है. 5 plus 1 is 6. Understood? Yes. Now we are going to solve the last question. तो बच्चों मुझे बताओ लास्ट क्वेश्चन कौन सा है? 3 plus 5 इसका आंसर क्या होता है? कौन मुझे बताएगा? 3 plus 5 इसका आंसर क्या होगा? Yes. After 5 which number comes? 6, 7 and 8. So student, our final answer is 8. Understood? So student, 3 plus 5 is 8. Okay? Yes. So student, now we are going to see one more example. Okay? So student, here we have given a blank spaces, right? And उसके बाद हमें दिया है प्लस साइन और आंसर दिया है, ओके? दैट इज 6. अब हमें यहाँ क्या करना है? Yes, we have to find 2 numbers such that when we add the both numbers, we will get the answer 6. So student, tell me which number we are going to add that will give us answer 6. कौन मुझे बताएगा? 2 नंबर कौन से ऐसे हैं जिसे ऐड करने के बाद हमें आंसर 6 मिलेगा? Yes, we can add anyhow. That is 4 plus 2 is also 6. 5 plus 1 is also 6. 2 plus 4 is also 6. Right? तो मुझे बताओ हम क्या लिखेंगे? Yes, we are going to write 4 plus 2 is also 6. 3 plus 3 is also 6. 5 plus 1 is also 6. You can write any numbers, okay? But the total should be number 6. Okay?
So student, today we have seen from the page number 63, 64 and 65. Okay? In the next lecture, I am going to continue teaching from page number 66 and 67. Okay? That is from question number 5, question number 6, question number 7 and question number 8. Okay? Yes. So student, for your homework, you all have to complete page number 63, 64 and 65. Okay? Yes. And in the next lecture, we are going to continue this lesson. Okay? That is, let's us add. Okay? Yes. Till then, stay safe, stay home.